गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले हम 5 काइंड उसका पढ़े हैं, उससे आगे 5 काइंड आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट काइंड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट काइंड है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे, 6 नंबर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखेंगे एच every either and neither are called distributive adjective. Distributive adjective when they are followed by a noun. When they are followed by a noun. एग्जाम्पल लिखेंगे each boy had a pen. इस सेंटेंस में each जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है 7th नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव what, which and whose are called interrogative adjective when they are used with when they are used with
nouns, to ask questions, to ask questions. एग्जाम्पल लिखेंगे which box is yours, which box is yours. इस सेंटेंस में विच जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। 8 नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव adjective need from proper nouns are called proper adjectives. Proper adjectives. प्रॉपर एडजेक्टिव्स एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। इस सेंटेंस में इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 9 नंबर एडजेक्टिव लिखेंगे एवरी, सेम, सेम, इट इज शेयर, such adjectives as are used to emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called adjectives।
एग्जाम्पल लिखेंगे I saw them with my own eyes. ऑन आइज जो होगा इसमें एम्फाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तीन नंबर है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव लिखेंगे व्हाट is called an exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एग्जाम्पल लिखेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। इसमें व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में वर्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। इसे सभी साफ सुंदर राइटिंग में लिखिए। तो सभी को साफ सुंदर राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट इस रेस्ट काइंड जो हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे 1 to 5, इसके काइंड रेस्ट 5 आज हम लोग पढ़े। ओके बाय।
से लर्न राइट कर लेना है सभी को।